So obviously it was amazing to hear all these speakers, and my talk is pretty much summary of what has been communicated to you guys so far. So I am a very normal girl, very ordinary. मतलब इस भीड़ में किसको लगता है कि वो सबसे ऑर्डिनरी है? प्लीज रेज योर हैंड. सब ना? मैं वही हूँ, मैं बिल्कुल वही हूँ. सो स्टिल इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा होगा लाइफ में, वरना मेरे को नहीं बुलाते, राइट? सो आई टेल यू, आई एम अ वेरी 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 ऑर्डिनरी गर्ल with extraordinary dreams and extraordinary belief in myself, and I have capacity to do extraordinary hard work. So let me start it this way. So if I see this auditorium, there are two ways to say it. One, ठीक है, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, घर जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे, ठीक है? I see it other way. I see huge potential. जैसे मैं बोलती हूँ I see huge potential, कुछ लोग अपने को खुद ही साइड कर देते, नहीं मैं नहीं हूँ. So this is my task today, to make you guys believe that yes, it's you. So when I say huge potential, so do you know India is a very young country? So why am I saying India is a very young country? 50% of our population is below the age of 25, and 65% of the population is below the age of 35. So India is sitting on a huge demographic dividend. So what is demographic dividend? Yeah. Exactly. So basically, if so many people are young, there is a huge potential that there are more people who are going to be working. So we have huge potential in terms of manpower, which will eventually help us, or which will eventually contribute to the economic growth. But unfortunately, the youth that we have, if you guys don't realize your potential, this dividend will turn into a liability. Liability समझ में आता है? मतलब मम्मी पापा नहीं बोलते क्या बोझ बन गया मेरे सर पे, ठीक है? So this is what is going to happen. So all of you must be thinking कि ठीक है, कंट्री है, चल रही है, इतने साल से चल रही है, मेरे को क्या? So let me tell you, it's not about country. It's about you. It's about your family. It's about your society. It's about, again, your hopes, your dreams. So basically क्या होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले यहाँ इस सीट पे बैठे हुए, आप सब बैठे हुए, but that is not the truth. आपके साथ बैठा हुआ है आपके पेरेंट्स का होप, आपके सिबलिंग्स का होप. For that matter, if I am sitting here, I know for a fact मेरी जो नीज है, मेरी सिस्टर की डॉटर, वो आज स्कूल में बोली मेरी मासी टेड टॉक देने हुई है. So you have this thing. So you're not alone sitting over there. With you sitting is your parents का hope, your society का hope. So बहुत common चीज होती है ना, अगर आप छोटे शहर से आते हो. Most of us belong to tier 2, tier 3 city. I come from a place जिसको मैं city में नहीं बोलती. So it's a very, very, very small town that is out there. I'm originally from Jamshedpur, but we are from outskirts of Jamshedpur. So we might be the first engineers, first doctors, first maybe IPS officers, first startup founders from our society. लेकिन जब हम first होते हैं तो पता है क्या होता है? मेरे सोसाइटी में जाके लगता है यार ये तो अच्छा, मैं जिस जगह से आती हूँ उस जगह का नाम है गमरिया, मुझे कॉलेज में बहुत चिढ़ाते थे मेरे होम टाउन के नाम से. So उनको लगता है यार मेरे जगह की लड़की कर सकती है तो मैं भी तो कर सकती हूँ. Or for that matter, I remember when I was still in school, I heard that there was someone from my town who topped the state in +2. So मेरे को वो belief आया कि वो कर सकता है तो मैं भी तो कर सकती हूँ. Similarly, like I said in the beginning, if I can do it, you guys can also do it. And each one of you who are sitting over here should be that one person. मैं नहीं बोल रही हूँ कि everyone should be startup founders. If you are, that's really amazing. That's not उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. But all of you should be like, मेरे को कुछ तो ऐसा करना चाहिए लाइफ में, which is going to be inspiration for my family, for my society, and obviously help my country. मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देती हूँ. We have so many people here. अगर एक जना भी उठता है और स्टार्टअप करता है, and आपका स्टार्टअप अगर मॉडरेटली सक्सेसफुल भी हो जाता है, I'm not saying very successful. So न्यूज में हमेशा आता है ना, like he said about top 25 startups and all. Let me tell you, there are many more startups out there who might not be in news, but they are employing 100 and 500 people. So अगर आप लोगों में से कोई एक जना भी उठ के स्टार्टअप करता है, तो इस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे हैं,
सबकी नौकरी लग सकती है, सिर्फ एक स्टार्टअप। अगर 2 स्टार्टअप होता है तो इस पूरे कॉलेज की नौकरी लग सकती है। सो दे विल बी 100% प्लेसमेंट, नॉट जस्ट इन दिस कॉलेज, और फॉर दैट मैटर हो सकता है कि आपका इतना बड़ा हो जाए कि पूरी बरेली की नौकरी लग जाए। सो नाउ अभी दिस इज यू मस्ट बी लाइक यार स्टार्टअप ही करना है क्या, स्टार्टअप ही कर सकते हैं क्या? दैट इज नॉट इट। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। लेट्स से कल को आपको बस आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपको मास्टर्स करना है। सो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हो, यूएस की यूनिवर्सिटी में जाते हो फॉर डूइंग मास्टर्स, तो आप अपने साथ पीछे बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खोल देते हो। अगर उनको पता होता है कि अच्छा मेरे को भी जाना है, तो दे विल कम टू यू। और फॉर दैट मैटर, लेट्स से यू डिसाइड आई एम गोइंग टू ओपन अ स्कूल। If you open a school, you're going to educate, let's say, hundreds and thousands of students. So, kuch we need to do that is going to serve not only you, but the society as well. और मैं एकदम वो वाला ज्ञान नहीं दे रही हूँ, कुछ करो सोसाइटी के लिए। Let's be very selfish here. I'm talking about you. So, I'll tell you step by step. That if you are someone who right now is at a place जिसको लगता है I'm very ordinary, मैं ज्यादा से ज्यादा नौकरी कर सकती हूँ, और for that matter वो भी देखती हूँ, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, किस्मत के भरोसे बैठे हैं। From here, how you can go to a place where obviously you will be coming here and giving a talk someday. I am very sure. And how many of you, by the way, want to come here and give a TED talk here in some university? That's great. Give a clap for yourself. नहीं है क्योंकि आप भी कर सकते हो। कैसे होगा मेरे को तो नहीं पता यार, मैंने तो आज तक नहीं किया, 10th तो किसी तरह पास किया, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा, आज तक नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये सब क्वेश्चंस हटा दो, दिमाग से हटा दो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, आई कैन डू इट, वो फिगर आउट हो जाएगा। लाइक आई एम रिपीटिंग, इफ अ 10th क्लास किड, अभी आज के डेट में तो 14 साल का बच्चा बहुत कुछ कर ले रहा है, बट मैं बता रही हूँ पहले हम लोग बहुत बेवकूफ हुआ करते थे, बस इंटरनेट नहीं था, ठीक है। सो नाउ rather than rejecting yourself, rather than saying कि मेरे से नहीं हो पाएगा, I recently saw a rap. There's a rap show, Instagram में मैंने देखा, मैं नहीं तो कौन वे, ठीक है, मैं नहीं तो कौन। So that is the thing, मैं नहीं तो कौन, this should be the attitude. वो क्यों, मैं क्यों नहीं? And trust me, you need to have this attitude. And don't let anyone in this society tell you that you cannot do it. Let me tell you, when I was doing startup, there are friends who know me since childhood, and they were very supportive. But then there were people who just knew me from 2 years or something. They haven't had interaction, and they would just say कि वाह इसे कोड तो हो नहीं रहा है, स्टार्टअप होगा, ठीक है। That there will always be such people. And again, I will quote a dialogue from Gully Boy. So that dialogue really hit me really hard, and that movie I saw in as one of my really low period of my life, and that was like, अब कोई बाहर वाला मेरे को बताएगा कि मैं कौन हूँ। So आपको कोई नहीं बता सकता कि आप कौन, लेकिन अब खुद को तो बताओ। हम लोग खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, एंड स्पेशली गर्ल्स। आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग आउट दिस होल गर्ल थिंग, आई वांटेड टू कीप इट जेनरिक। आई डोंट नो व्हाई, बट गर्ल्स समवेयर इन दिस सोसाइटी, द वे वी आर ब्रॉट अप, वी आर आस्क्ड टू कीप इट डाउन। मेरे को बोला जाता था जब मैं स्कूल जाती थी कि लड़के मत आना, वो तो लड़कों को भी बोला जाता है वैसे, बट यू आर ऑलवेज आस्क्ड टू कीप इट डाउन। आई डोंट नो व्हाई। टॉक स्लोली, आराम से बात करो, ये कैसे चल रही है, ये कैसे दौड़ रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर, लड़कों जैसा दौड़ती है। अरे जो ओलंपिक्स में जीत रहे उनको जाके देखो वो कैसे दौड़े, वो लड़कियों जैसा दौड़े, वो दौड़ रही है। सिमिलरली यू गाइस नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, नॉट जस्ट गर्ल्स। आई सेड इट स्पेसिफिकली बिकॉज समवेयर द सोसाइटी नाउ इट हैज चेंज्ड little bit, but somehow we are just asked to keep it down. Don't keep it down. Open up yourself, believe in yourself, and you can do it. There's no one who can stop it. कैसे होगा? You will see. So अभी तक मैंने आपको कुछ भी extraordinary करने को नहीं बोला है, एक सपना देखने को बोला है। यार एक सपना तो बनता है यार, इतना ब्रेन है यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, एक सपना देख लो, क्या ही हो जाएगा। नहीं होगा पूरा, कोई बात नहीं है। अभी मैंने क्या सपना देखा था, रिचेस्ट बनने का, अभी बनी क्या मैं, बनूंगी क्या? आंसर इज यस, आई स्टिल बिलीव इट। अभी मेरे को पता भी है रिचेस्ट का वैल्यूएशन कितना ज्यादा है, मेरे को पता, आई कांट इवन स्पीक अबाउट इट, बट आई स्टिल हैव दैट ड्रीम, एंड इट्स ओके इफ आई डाई बीइंग नॉट द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड और रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट दैट ड्रीम कीप्स मी अलाइव एवरी डे. I don't know what will I do if next day I get up and I don't have a dream. Obviously there are a lot of things that keeps you going, but what keeps me alive is my dream. Associate yourself not with people, associate yourself not with things, associate yourself with your dream, and no one can take
away that dream for you. So जब सपना देख लिया, believe कर लिया, अब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. Second part that comes in is very important, and also Praful talk about it. So that is research, plan, have awareness, and see how you can step by step get closer to your dream. So when I say research, right now there are a lot of things. You have YouTube, you have social media. Social media का research में थोड़ा I won't suggest, but you talk to people, like you have these kind of events that's getting conducted, and very important, books, बहुत important. आज के टॉक में आपको 2 लोगों ने बोल दिया ना बुक्स पढ़ने को, तो समझ जाओ बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है. सो अब कैसे बुक पढ़े? I'll keep it very practical. Let's say you want to be an investor. Fine. So just Google top 5 books on investor. So you'll be reading the biographies of people who are successful in that field and books related to that. So let's say if I talk about investment, I'll read Warren Buffett, I'll read Peter Lynch, I'll read Rich Dad Poor Dad. Books से आपको बहुत knowledge मिलते हैं. You will read from the experiences of people who have done it and the mistakes that they have done it, so that you don't do it. So I'll tell you, and somehow books, वो होता नहीं, एक serial था बहुत पहले DD National में. So what she used to do, and I didn't used to believe that, but she used to open, at any time she used to have any problem, she would open a book. And she would read the book ka one panna and she'll get a solution. This is how it is. I'll tell you, I was reading a startup ka book. Exactly around that time, one of my first employees resigned. मैंने लाइफ में रेजिग्नेशन नहीं देखा था. मेरे को पता ही नहीं कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इमोशन हैंडल करते हैं. I just read a book. उसमें it was written. These things are very normal, and you have to learn how to handle it. And people who are leaving your organization, just be happy that whatever they have served, they have served. This was their journey with you. You don't need to be emotional about it. So it just came off somehow. So similarly, all of you read books. How many of you read books actually? Okay, a lot of you. Okay, so I would suggest just whatever is your dream, read books around that. And in general also, if you read books, that will give you a lot of knowledge. And you are as aware as your decisions are as intelligent as your awareness. So जैसे मैंने 10th क्लास में बोला मुझे बिल गेट्स बनना, एक तो सपना देख लिया हवा में, ठीक है. दूसरा, उस टाइम क्या समझ में आ गया 10th क्लास को, तो मैंने सोचा कि बिल गेट्स क्या करता है, मुझे पता था कुछ कंप्यूटर सर्च करता है, उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी नहीं पता था. सो आई डिसाइडेड ओके फाइन, कुछ कंप्यूटर साइंस करना है तो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा. कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना है तो 12th करना पड़ेगा, 12th से पहले 10th करना पड़ेगा. कुछ अलग नहीं था, बेसिक. आई वाज लाइक ये तो बेसिक है, इतना तो फैमिली भी बोल रही है करने को. But what I could do is give my best at each and every stage. I had to give my best at 10th, I had to give my best at 12th, I had to give my best at engineering. Similarly, आपका जो ड्रीम है हो सकता है वो बहुत बाद में अचीव हो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो आपको एक एक करके करने पड़ेंगे और आपको हर स्टेप में अपना बेस्ट देखना पड़ेगा. And best देना तो you should be giving, you should be working really hard at each and every stage. And this is what is the next part. Work hard, be consistent, be ready to pay the price, and no matter what, just don't give up. Be ready to pay the price. I'll talk about it. So let's say work hard. So पहले तो यहीं पे बुक पढ़ना एक हार्ड वर्क हुआ, और ऐसा नहीं कि उठे पूरा एनर्जी में पढ़ लिया एक हफ्ते में बुक और फिर एक महीने सो रहे. You don't have to do that. So let's say you take up the books, you read it, you make a plan कि चलो ये करना है, ठीक है. So hard work से हम लोग बहुत भागते हैं. And I'm telling you, I've been doing prep bites since almost 3.5 years now. I've talked to many students, और उनका एक ही प्रॉब्लम होता है, वो मेहनत नहीं करना चाहते. And not just students, many people in general, even after they're in job, they are like अच्छा ठीक है अब जॉब हो गया वहीं सेटल डाउन हो जाए. बट हार्डवर्क तो बेसिक है, वो तो करना ही चाहिए. एंड हार्डवर्क बहुत ये ऐसा नहीं है कि you just have to leave everything and start working hard. Let's say right now you are someone who doesn't study even 10 minutes a day. Start from half an hour a day, 1 hour a day, but you start it. कंफर्ट जोन में कंफर्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है. एंड लेट मी टेल यू, वो कंफर्ट भी टेम्परेरी होता है. इफ यू आर एट कॉलेज राइट नाउ, योर फीस इज गेटिंग पेड, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट द मोमेंट यू गो आउट ऑफ दिस कॉलेज, इट्स नॉट ईजी. It's really not easy. For you, let's say even if you sit at home, your relatives are going to dance on your head. Even if you go out, people are going to ask क्या चल रहा है, right? So it's not easy at all. So you need to start working hard. You need to come out of your comfort zone. And like I said, when you are working hard, you have to do it step by step. आज 15 मिनट कर लिया,
कल लेट्स से हाफ एन आवर कर लिया, उसके बाद 1 घंटा कर लिया, बट एवरी डे यू हैव टू कीप ऑन गोइंग अप. नाउ सम पीपल से कि मेरे पास मेहनत करने का टाइम नहीं है. डू आई हैव एनीवन जिसके पास मेहनत करने का टाइम नहीं है? चलो, ये पीपल हैव टाइम. सो नाउ मेनी पीपल से मेहनत करने का टाइम नहीं है. सो दिस इज वेयर यू नीड टू चूज प्रायोरिटीज. एंड दिस इज वेयर आई चोज द प्रायोरिटी. लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर Amazon, बहुत सही था, पैसे भी आ रहे हैं, साथ में स्टार्टअप भी कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल हु डू स्टार्टअप दे हैव दिस थिंग कि एक बार स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए फिर जॉब छोड़ेंगे. एंड दे जस्ट स्टे इन दैट पर्टिकुलर डिलेमा फॉर एवर. बट दिस इज द थिंग, इफ यू थिंक दैट एक सक्सेसफुल होगा फिर दूसरा छोड़ेंगे, यू वॉन्ट टू प्ले सेफ, इट वॉन्ट हैपन. So I took just on that belief, 4 years back I left my job at Amazon. And that job for which I worked really hard. I'm going to talk about that. So similarly, you guys might have to choose your priorities. You might be doing too many things. When we are in college, we try to do everything. So you have to choose your priority. Maybe cut down your social media time, cut down your friends' time, cut down something. But you need to take out the time. And let me tell you, if you want to be successful, you will have to be a little selfish. I am very selfish. You go and talk to my friends. I can tell you n number of lies that I have done to cancel the plans with them in the last few years. Some of them who really love you, who really value you will stay, and some of them will leave. And it's absolutely fine. People who will leave, anyways, they didn't deserve to be in your life. So it's absolutely fine. And you have to be selfish. You will know कि सामने वाले को पता है कि आप झूठ बोल के प्लान कैंसिल कर रहे हो, but that is fine. You will have to be selfish. You will know that you're not giving time to your relatives. They will know that you're not giving time because you are doing something and you're lying, and that is fine. But you have to be very selfish. And the most important part is to be consistent. Like I said, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते पूरा एकदम दिन रात लगे हुए हैं, आज 4 TED Talk देखे हैं, आज तो कुछ करके ही छोड़ेंगे. We are in that phase, सो ही नहीं रहे, लगे पड़े. And then after 1 month, 1 week, we are all exhausted. Like I said, you have to start slowly and slowly. You have to work hard and you have to be consistent. अगर लाइफ में एक मंत्र रखना है ना, तो कंसिस्टेंसी का रखो. कंसिस्टेंसी, पहली बात तो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, तो मेरे को कंसिस्टेंसी भी 2-3 साल पहले ही पता चला कि ऐसा एक वर्ड होता है. एंड बट देन आई रियलाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू गो टू जिम, फर्स्ट डे यू विल सी यू आर नॉट इवन एबल टू लिफ्ट 3 किलो का वेट. द सेम पर्सन यू सी बीइंग कंसिस्टेंट is eventually lifting 20 किलो का वेट. Because human body, human brain has indefinite capabilities. I am saying many of you have not even used, I'll say, what you have not even imagined what you are capable of doing. We are capable of doing a lot of things. You go and see world records, man. They are people, they are human beings just like you and me. Just now there was a world record that was made in marathon. I have some awesome photos. Anyone knows about it? I've taken on iPhone. Yeah. So there was and it was said that is almost humanly impossible. And now you will see in just few years that record will also be broken. Because as soon as one person does it, we feel that okay, one person has done it, I can also do it. So we are limitless. We can do anything we want. We just have to start working hard, and we have to keep working hard, and we don't have to give up. Now, as soon as we start working